Modeling in time domain is done by using state space presentation, and the main advantage is that it can अभी be बनाना है क्या उसको? hmm? अभी बनाना है उसको? असाइनमेंट चलो बना लेना, मैं उसका टाइम चेंज कर दूंगी। अभी थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं ना, थोड़ा कोर्स आपका बिहाइंड चल रहा है। तो एक्चुअली मंडे में आपका सेशनल है ना, तो सेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज का ये जो दिस इज एक्चुअली ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, दे आर कवर्ड इन unit 2. So what I am doing is that I am giving you the syllabus for sessional 2 will be unit 1 and unit 2. Unit 1 is mathematical modeling and unit 2 is block diagram and signal flow graph. All right. So let us start the last topic of unit 2, which is signal flow graph. Okay, so what is signal flow graph is that how to reduce the block diagram to a single transfer function. The objective of block diagram representation is that we want to convert a complicated block diagram into a single transfer function. So now a technique for reducing signal flow graph to a single transfer function will be presented. This technique is given by the formula Mason's gain formula. So for which some basic definitions on signal flow graphs are introduced first. So for this end, we use the following signal flow. Suppose this is our signal flow graph. All right. So in this, the first definition is loop gain. So what is loop gain? The product of branch gains found by traversing a path that starts at a node and ends at the same node. Okay, so suppose we are following a direction of the signal flow graph without passing through any other node more than once. So one of the loop one is G to G1. So this is one of the loops. So you start from this node, go to this node and come back to this node through this path G2 into H1, and you multiply the path gains. This is called the path gain. Okay, so this is node. In signal flow graph, the small circles are called nodes and the arrows are called the paths. So this is the node. So you start from this node, go to this node using this path, and this transfer function is called the path gain. So this is the G2S is the path gain of this path. H1S is the path gain of this path. So L1 is basically G2 into H1. All right. Similarly, L2. L2 is G4 into H2. So this is another loop because you are starting from this node, going to this node and coming back to this node. Okay. Similarly, L3, G4, G5 into H3. So this is starting from this node, going to this node and again coming back to this node through H3. So the transfer function, the overall transfer function of loop 3 is G4, G5 into H3. Another loop, this loop. You start from this loop, but this is not a loop because as you can see that you are not coming back to this because the direction of this path is reverse. So this is not a loop. Another loop is you start from this point, go to this point, take this path, come to this node and come back to this node, right? This is another loop. Starting from this node, going to this node, then taking this G6 path, coming to this node and then coming back to the original node. So L4 is G4, G6, H3, right? Are you getting my point? You can note down this in your notebook. Another term is called the forward path gain, the product of branch gains found by traversing a path from the input node, source node to the output node, which is the sink node of the signal flow graph in the direction of signal flow without crossing any nodes more than once. For example, in the previous problem, as you can see that this is a forward path because we have to go from the input node, which is the RS, the output node is CS. You have to start from the input node and then go to the traverse all the nodes in the way and come to the output node without traversing any node more than once. Okay, so this one is the first forward path.
G1, G2, G3, G4, G5, G7. Okay, so first forward path is this. There is another, can you see another forward path in this? I can see another forward path in this signal flow graph. Can you see it? And tell me what is the path gain of that forward path? F2? G1, G2, G3, G4, G6, G7. G6, G7. Correct. Absolutely right. So there are two forward paths. One is straightforward from RS to CS. Then another one is if you take this from this node, if you take this path, you can also come to this node, output node. Okay, so another forward path is starting from RS, G1, G2, G3, G4. Instead of taking this path, you can take this path also. There is another path, G6, then G7, and come to the output node. So this is two forward paths in our example. G1, G2, G3, G4, G5, G7, G1, G2, G3, G4, G6, G7. Okay. Then another term which is normally used in signal flow graph is non-touching loops. So what are non-touching loops? Loops that do not have any node in common. For example, L1 does not touch loop L2, L3, and L4. You can see this. L1 is this, L2 is this, L3 is this, L3 is this, this one. This is L1, L2, L3, and L4. So this loop is non-touching to all other loops. So L1 is non-touching to L2, L3, L4. Okay, so this is an example of non-touching loop. Then non-touching loop gains. The gain products of a possible combination of non-touching loops taken 2, 3, 4 or more at a time. In our example, there are 3 non-touching loop gains taking 2 at a time. So L1, L2, you can see that L1 is non-touching L2, L1 and L2. So it is basically G2, G1 into G4 into H2. So yeah, here L1, L2 is G2, H1, G4, H2. Then L1 is not touching L3 also. So therefore G2, H1, G4, G5, H3. And L1 is also not touching L4. Therefore, G2, H1 into G4, G6 into H3. Since there are no more non-touching loops taken higher than 2 at a time, right? Because there are only 2 non-touching loops, 3 non-touching loops, but 2 taken together. All right, you can note down this in your notebook. Ma'am, actually the time for assignment is 10:30. And ma'am, here we are giving class also simultaneously. It's kind of overlapping. मैं उसको चेंज कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन करो, मैं चेंज कर देती हूँ. Okay, ma'am. Thanks. Thank you. क्लास वर्क चेंज कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ PM कर देता हूँ, शाम तक कर लेना. इसको प्रैक्टिस तो करना है आपको टेस्ट के लिए, इसलिए आप लोग कर लो. So this is what we were doing right now. So signal flow graph. Then Mason's gain formula. This is the formula for Mason's gain. PS is equal to CS upon RS, which is the transfer function of the system represented by the signal flow graph. It is basically sigma of Pk delta K upon delta, where K is the number of forward paths, Pk is the kth forward path gain, delta is 1 minus sigma ALA plus sigma BCLB LC minus sigma DEF LD LE LF and so on. So what is sigma ALA is the sum of all individual loop gains. Okay. Then sigma BCLB LC is the sum of gain products of all possible combination of 2 non-touching loops. Then sigma DEF LD LE LF is the sum of gain products of all possible combinations of 3 non-touching loops. Okay. Then delta K is the delta minus loop gain, summation of loop gains in delta that touch the kth forward path.
In other words, delta K is formed by eliminating from delta those loop gains that touch the forward path Pk. Okay, so let us take a numerical problem. First, you write down this formula in your notebook. This is very, very, very important formula. Always asked. Problem for better understanding. So suppose this is the signal flow graph of the system for which you have to find the transfer function Cs by Rs. Okay, so let us see how many forward paths are there. So you have to start from Rs, go to Cs. So this is one of the forward path, G1, G2, G3, G4, G5, right? So this is one of the forward path. Can you see any other forward path here? No, ma'am. Yeah, so only one forward path. And then loops. So there is this one loop, G2 into H1, another loop, G4 into H2. Then this loop also G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, L4. And this loop G7, H4. So these are the 4 loop gains. Now you find out non-touching loops. How many non-touching loops are there? V6, H4, V5, G7 and नहीं, L1 L2 की टर्म्स में बात करो. L1 हो गया, L1 और L2 they are not touching, है ना? yes, ma'am. And then what about L3, G7, H4? It is also non-touching, ma'am. It is also non-touching. So there are 3 non-touching loops out of 4. बाकी वो जो बड़ा वाला है वो तो टच कर ही रहा है सबको ना, in any way. मैम So तो वो there L2 के साथ भी तो टच are, L2 के साथ भी तो बड़ा वाला L2 के साथ टच तो कर रहा है, सभी के साथ टच कर रहा है बड़ा वाला. तो G2, G3, G4 तो वो तो दोनों को टच कर दिया. फिर वो इसमें आ रहा है नोड G7 तो वो भी टच कर रहा है वहां से भी. तो L4 is not touching, मतलब L4 is touching every other loop, but L1, L2 and L3 are non-touching loops as far as I can see here. Yes, by identifying the non-touching loops taken 2 at a time, we find the loops L1 does not touch loop L2 and L3, and L2 does not touch loop L3. Okay, so L1 into L2, find out the loop gains L1, L2, L1, L3, L2, L3, right? So finally, the non-touching loops taken 3 at a time, L1, L2, L3, will give you this gain, L1, L2, L3, because there are 3 non-touching loops. So you have to take that also into consideration. Okay, now you have to find out delta. So delta is basically, what is delta? From the Mason's gain formula, delta is 1 minus sum of all individual loop gains. So ये 1 minus all individual loop gains, then sum of gain products of all possible combination of 2 non-touching loops minus sum of gain products of all possible combinations of 3 non-touching loops. तो इसलिए आपको यहाँ पे 1 minus all L1 plus L2 plus L3 plus L4, right? Plus L1 L2 L1 L3 plus L2 L3 minus 3 non-touching loops L1 L2 L3. Substitute the values and you will get this long formula, right? You can see for yourself. Keep on writing, taking notes, keep on taking notes.
step is finding delta 1. So delta 1 is from the formula delta 1 into pk. So delta k is delta minus loop gains in delta that touch the kth forward path. Okay, so basically delta 1 is 1 minus L3. L3 is which one? Yeah, this is a forward path. Only one forward path is there. So the loop which is not touching this particular forward path is L3, this loop. So we write this 1 minus L3. So it is basically 1 minus G7H4. So applying the Mason's formula, you get CS upon RS as P1 delta 1 upon delta. So P1 is first forward path, that is G1, G2, G3, G4, G5 into delta 1. 1 minus G7H4 upon delta, this whole term. Okay. So please take notes and ask if you have any difficulty. Problem and try to solve it. This is another problem on signal flow graph. This is the signal flow graph. You have to find out the transfer function. Assignment. कोई बात नहीं है. ओके मैम, ओके. हाँ, ऐसे होते हैं. ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं, सेंसर नहीं लगे हुए हैं, इसमें सब में सेंसर नहीं है. मतलब वो इस नोड को इस नोड से -1 से कनेक्ट करा, या सेल्फ नोड है, हो सकता है, होता है. Excuse me, ma'am. Ma'am, you have not increased the timing of the block diagram problem. कर तो दिया, नहीं हुआ. Ma'am, the block diagram problem. लेट मी चेक. हाँ, वो पीएम में हो गया भाई. यस मैम, हो गया हो गया ना. यस मैम, यस मैम. Should we solve that one also by Mason's game? नहीं, अभी आपको ये सिग्नल फ्लो वाला करना है. वो तो मैंने टाइम बढ़ा दिया ना उसका. वो आबादी टाइम तो बढ़ा दिया आपने. मैं कह रहा हूँ कि वो उसको भी सॉल्व कर ले सिग्नल फ्लो ग्राफ से. मैं हाँ 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर. So let me take attendance now. एक्चुअली थोड़ा Now कॉम्प्लेक्स 1 में है. plus Hmm. twice of G4 Hmm. plus twice of G3 G4 Hmm. plus G2 G3 G4. अगर ये 1 यार 2 आ रहा है. दिस इज द आंसर. मैं इसको शो कर देती हूँ. मैम मेरा आ रहा है मैम G1 G2 G3 G4 डिवाइड बाय 2 प्लस G4S होल ब्रैकेट 1 प्लस G3 GS G3 of S plus G2 of S G3 of S plus G3 of S G4 of S. दिस इज द आंसर. कैन यू सी? यस मैम, ये आ रहा है मेरा. ये आ रहा है ना, ठीक है. हाँ, तो योर आंसर इज करेक्ट. अब चलो, यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द अदर प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको अपलोड करी हैं. आधा घंटा आपको देनी है. एक्चुअली वैल्यूज अगर होती है मैम इजी हो जाता है मैम. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है. नहीं, अब ऐसे ही आएगा ना. वो क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं ना, इसीलिए आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ. अभी जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसमें कुछ कुछ में वैल्यूज भी हैं. 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, उसको कर लीजिए आप लोग.
एक्चुअली जो आपने असाइनमेंट अभी तीसरा वाला ये पोस्ट किया ना, उसमें 2 से 3 पता चल रहा है G1 है, 3 से 4 पता चल रहा है मैम G2 है। मैम ये 4 से 5 कौन सा वाला है? देखिए क्वेश्चन की बात नहीं है मैम, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट यस क्वेश्चन। मैम फर्स्ट। देखो एक तो G1 है, फिर G2 है, G3 ये है, फिर G4। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, थोड़ा बोल दीजिए। वैसे 2 से 3, 4 से 5। अच्छा एक मिनट, देखो इनिशियली 1 है ना, R से स्टार्ट करो, 1, फिर 1, फिर 2, फिर G1 है ना, फिर G2, फिर G3, फिर G4। ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में G1, G2, G3, G4 एक सीक्वेंस में है। फिर ये जो 3 to 6 जो वो लूप है उसमें G5 है। ठीक है, फॉरवर्ड लूप, नोड नंबर 3 टू नोड नंबर 6 G5। ओके मैम, ओके। एक सेल्फ लूप है -H1। ठीक है, नोड 6 पर -H1 है, नोड 4 और 5 के बीच में -H2 है, नोड 2 और 5 के बीच में -H3 है। मैं इसका वर्ड डॉक्यूमेंट भी कर देती हूँ अपलोड ना, शायद इसमें ज्यादा 2 और 3 के बीच में क्या है मैम? 2 और 3 के बीच में G1 मैम, नहीं वो H की टर्म्स में। -H1। अच्छा हाँ, यहाँ पर है -H1 और 6 नोड पे -H4 है। ओके मैम, ओके मैम, एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए H वाला। देखो 2 और 3 के बीच में -H1, ठीक है, 4 और 5 के बीच में -H2, 6 पर -H4 और 2 और 5 के बीच में -H3। ठीक है, मैं आपको ना वर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देती हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। यस मैम बहुत। 11:50 का टाइम है ना, 12 कर देती हूँ। अभी तो सबने दो ने टर्न इन कर दिया, रासिक, फिरदौस, रोहित पांड्या। ओके मैम तीसरा वाला तो मैंने नहीं किया अभी। तो फिर क्यों करा, तीनों करके करने हैं ना मैम। आपने अलग अलग विंडो बनाए हैं ना मैम। ये सेकंड वाला है। सेकंड में एक क्वेश्चन ये हुआ, तो एक ही इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है ना इस असाइनमेंट में। 3 क्वेश्चन है। यस हाँ, तो ये तो एक एक करके जमा कर दिया इन लोगों ने, तीनों करके जमा करना है। मैं आपने अलग अलग विंडो बनाई है ना। अलग विंडो इसलिए बनाई है कि वो आप लोगों को पीडीएफ में दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने वर्ड डॉक बनाया है। जो आपने ऑलरेडी विंडोज बनाई थी हमने तभी वो वाले सबमिट कर दिए थे। अच्छा अच्छा, गलत सबमिट कर दिया आपने। देखो एक है क्वेश्चन 1 जो मैंने अभी पहले दिया था ना, ये क्वेश्चन 1 SFG, ये वाला क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 2 में सबमिट कर दिया है, ये किया है आपने। रासिक, फिरदौस, रोहित पांड्या, आपने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में सबमिट कर दिया। इसको डिलीट करिए और इसको क्वेश्चन 1 में सबमिट करिए। क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन 2 किसी ने भी नहीं सबमिट किया, इसका मतलब 3 क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं, ये आपने क्वेश्चन 1 इसमें क्यों सबमिट करा?